जब मैं छोटी थी मैं आई वुड गो डोर टू डोर सेलिंग समथिंग. सब लोग मुझे नफरत करते थे. जो भी कर सकती थी पैसे कमाने के लिए मैं वो करती थी. At very young age, like इतना पैसा नहीं मिलता था. After less than 6 months later, my father found out he had cancer. When I met Daniel, my mother just passed away. She was passing away. You know, I think the biggest life-changing things that happened in my life were my parents passing away, and that scar will always be there. The day that you find out you're having a baby, in your mind you're a mother. The second that you hold your baby, you're a mother until you know the day that you die. In America, आपको पता है कि आप कितने boys हैं embryos and how many girls. So हमारे पास 4 girls थे and 2 boys. And हमने कोशिश की that we would have a little girl first. So वो चारों के eggs didn't work out. सनी लियोनी के बारे में आपने तो बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, मगर वो निजी ज़िंदगी में कैसे रहती है ये सब आपको नहीं पता है. तो इस ब्रॉडकास्ट में आपको ये सब जानने को मिलेगा कि वो निजी ज़िंदगी में कैसे रहती है, उनकी निजी लाइफ कैसी है. ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा. कहाँ शुरू करो. जब मैं यहाँ आई थी मुझे पता नहीं था इंडस्ट्री कैसा, like how does it work, लोग कैसे होते, प्रोडक्शन कैसा होता है, एक्टिंग कैसा होता है, डांसिंग, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. सो ये सब चीज़ें सीखना आई वुडंट से दैट बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हाउ टू फंक्शन इन द एंटायरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यू नो, लाइक लोग कैसे होते हैं, पीपल हैव डिफरेंट रिएक्शंस. एंड आई थिंक beginning में I call it Bollywood boot camp and I went through boot camp and बहुत सारे चीज़ें सीखे मैंने. and you know, लेकिन सनी लियोनी ने अपने आप को बदल दिया. I don't know if it's बदल दिया. I think it's just growing and evolving Okay. with life and you know your circumstances. and अगर एक दरवाज़ा बंद होता दूसरा भी है that will open. And I believe in that. You know, if somebody is not going to let you in this way, then you figure out how to make your way to, you know, your goals. ओके. एंड ये चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी, मतलब आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखती हैं? I think like some of it's manifestation, लेकिन दूसरा चीज़ है reality. आपकी reality क्या है, आपकी प्लेट में क्या है. सिर्फ वो चीज़ें से आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या करना है. एंड लाइक आई सेड, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है देन दूसरा भी खोल सकता है. एंड इफ इट wasn't one person helping us, then we found a different way. So ये साथ में मेरे पति Daniel and I, we did this together, you know. And there were lots of hurdles and lots of different things that have come up. अभी भी होते, but you know, there's nothing, some things you can't help it and you just have to move on. सबसे अच्छी चीज़ क्या आपने मैनिफेस्ट की लाइफ I think that would have to be मेरे बच्चे. वो मैनिफेस्ट किया, प्रे किया, सब चीज़ें की है to hopefully have a family one day. and भगवान ने हमारी सुन ली और 3 बच्चे सेम टाइम पे दिया. वो सिर्फ that can only be God's plan, क्योंकि वो प्लान मेरा नहीं था. But it's worked out for the best because there are 3 beautiful children. बहुत क्यूट बच्चे हैं आपकी, और Thank you. लगातार मीडिया और देश के लोगों से बातचीत भी करते हैं. जो आपने एक आपकी जो बेटी है आपने उसको अडॉप्ट किया, काफ़ी क्यूट है, उसके बारे में आपने कैसे सोचा कि मुझे वो अडॉप्ट करनी चाहिए, मेरे घर में भी एक बेटी होनी चाहिए? Daniel or myself, हम चाहते थे that we wanted a little girl. And America में हम surrogacy भी उस same time पे कर रहे थे. And so in America आपको पता है कि आप कितने boys हैं embryos and how many girls. So हमारे पास 4 girls थे and 2 boys. And हमने कोशिश की that we would have a little girl first. So वो चारों के eggs didn't work out at all. It didn't happen. So then there were 2 boys left. And उस same time पे हमने adoption के papers, ये सब चीज़ें यहाँ शुरू किया था. And then one day I was working in Splitsvilla during a dumping ground. जी. And मेरा assistant यहाँ से आया और phone मुझे दिया. And Daniel ने बोला कि we've been matched with a little girl.
So वो सपना जो हमको चाहिए था, she was there. And then at the same time, we were going to go through with our surrogacy. The appointment was then, on the same day. So then that's how we got 3. There were 2 boys left and Nisha was there. So I think Nisha हमारी destiny में थी, क्योंकि वो जो 4 girls that were girl embryos, that didn't work out. भगवान ने बोला कि ये नहीं होगा, and your little girl is waiting for you and her name is Nisha. ओके सो बीइंग मदर ऑफ 3, मदरहुड जो एक फेज होता है वो एक वुमेन को किस वे में चेंज करता है? Every way. Just ask your own mother. I'm sure she'll tell you. I think that it's not a phase. The day that you find out you're having a baby, in your mind, you're a mother. The second that you hold your baby, you're a mother until, the day that you die, So it's not a phase. It's something that's there to stay. End nahi hota hai, being a mother. And I think you become more patient, more loving. Your life, your heart gets filled with so much love. And nothing can replace the love you have for your child. आपकी इमोशनल स्कार्स क्या रहे लाइफ में? बहुत सारे. कहाँ शुरू करूँ? जहाँ से आप बताना चाहें. No, I think that हर फैमिली में और हर इंसान में ऐसी चीज़ें होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जो एक what is it, निशान or a scar, you get a scar from it. But I think that वो जो भी experience है, you learn something from it. I think the biggest life changing things that happened in my life were my parents passing away, and that scar will always be there. Nothing I can do about it. Kuch nahi kar sakti hu. They're gone. But I know that I can live my life. What I learned from that experience was that I would want to be the healthiest mother, keeping myself healthy, exercising, eating well, to the best of my ability. So जो भी मैं कर सकती हूँ to be healthy मेरे बच्चों के लिए, मैं वो ही करूँगी. And that's what I learned from my parents, because they died too young from, various reasons. So. एंड आप ज़्यादा क्लोज किससे थे, अपने फादर से या अपने मदर से? I was definitely daddy's little girl. बहुत डांट मिलती थी मम्मी से. किस बात पर डांट मिलती थी? I mean everything, you name it. जैसे कि आपकी शरारतें या कुछ और? Everything I did was wrong. तो ऐसा होता है कि यूजुअली जो डॉटर्स होती हैं तो एक अनफुलफिल्ड लव होता है जो अगर फादर से नहीं मिलता तो वो अपने पार्टनर्स में ढूंढती हैं. तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में रहा है दैट सर्टन पार्ट ऑफ यू जो शायद फादर के थ्रू नहीं मिला या वो डैनियल ने फुलफिल किया, समथिंग लाइक दैट? I think that husband's roles and, your father's roles were completely different. Psychologically speaking, if you are a child that loses their family member at a very come age ka, then yeah, of course, you're always looking for a father figure or mother figure in your life. Like my parents died when they were, I was already an adult. So उनके लाइफ में जब मैं छोटी थी, सब चीज़ें किया हमारे साथ. Like they taught us everything, how to ride a bike, how to do so many different things, how to be hardworking and be honest. And ये सब चीज़ें दोनों ने सिखाया था. So in that way, I don't think उसमें कुछ कमी थी. Of course, when you meet, your husband or your wife, you look at qualities. शायद मेरे मम्मी और पापा के अंदर थे. Like you want those qualities, जो अच्छे qualities थे that you remember of your parents. So of course, you want someone hardworking, who's honest, and all these different things. So I think it all comes together, but not that I'm not looking for any fatherly figure in my husband at all. I like looking at him like he's, hot young man. आपका चाइल्डहुड का सारा, आप पढ़ाई में कैसी थी, स्पोर्ट्स में कैसी थी? मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी. I was C student, and I, मेरे लिए जो चीज़ें interesting थे was like art and sports. And we were first generation family in Canada, so that meant that मम्मी पापा ज़्यादा काम करते थे.
than taking care of मेरी पढ़ाई. And my brother was very smart, so उसके लिए easy था, लेकिन मेरे लिए easy नहीं था. But they had to work versus doing my homework, and so I don't know, I passed, so that's all that matters. But now look at me, everything is absolutely the way it should be. Okay. पैसा कमा सकती थी छोटे एज में. तो ऐसा पैसों को लेकर ऐसा पहले से मैनिफेस्टेशन था या कोई एक आइडियल मेट्रिक था कि यू नो दीज आर सम नंबर्स जो मैं अपने लाइफ में एस्पायर कर रही हूँ या समथिंग लाइक दैट? I don't think numbers was ever the manifestation. Manifestation शायद ये होगा that I'll own my own business one day. ओके. And that will definitely happen. जब मैं छोटी थी I would go door to door selling something. सब लोग मुझे नफरत करते थे. अभी वापस आ गई. Or I would shovel snow or build a lemonade stand, or you know, जो भी कर सकती थी पैसे कमाने के लिए मैं वो करती थी at a very young age, like 7-8 years old. इतना पैसा नहीं मिलता था, but I got enough money for a chocolate bar or candy. But at a very young age, I realized that if I work hard, I can make money, and I can do what I want with it. सेल्फ इंडिपेंडेंट शुरू से ही थी आप? Yeah, so that's one thing that मम्मी पापा हमेशा बोलते थे, शायद क्योंकि यहाँ से आए थे, and हमेशा बोलते थे, especially to, you know, because I'm a girl, that आपको independent बनना है. आपको कोई option नहीं है. You have to be independent. You cannot count on anyone. And I think that उनके backgrounds, my father's from Chandigarh, my mother's from Himachal, Nahan, and I think क्योंकि आप बॉलीवुड में भी आपने काम किया है एंड देन दिस टॉलीवुड, सो दोनों का जो सिनेमा है वो कितना डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे स्टार स्टडीड कल्चर बहुत है इन रिगार्ड्स टू मेल. तो हाउ हैव यू बीन डिफरेंट इन दोज? it's a female-centric film, which is good for me. ओके. There is a male star in it, and he's absolutely amazing, but it's not. It's a psychological thriller, and I think people will enjoy it. It's more in a real space than you know, people flying from one side to the other in the film, which is great to watch. But this is not that type of film, and I'm excited for people to watch this. And I did my dubbing for this film, and it's turned out really well. We're really excited for that. Yeah, same. आप हिंदी कैसे अच्छी बोल रही हैं? कैसे सीखा आपने लगातार? From Jeeti Rather. From the people around me, जो मेरे आजू बाजू है, मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ हिंदी बोलना. And I mean, I've been here for a very long time now, so थोड़ा तो सीखना पड़ेगा. और डैनियल भी सीख रहे हैं आपके साथ? You know, Daniel, मुझे ऐसा लग रहा है कि Daniel कुछ चीजें समझ आती है लेकिन बोलते नहीं है. So then मुझे भी थोड़ा सा ध्यान से बोलना. अगर मुझे कुछ बोलना है that's naughty about him, then I have to be careful. और बच्चे भी हिंदी सीख रहे हैं? Yes, Nisha reads and writes Hindi. Speaking, I think वो स्कूल में करती है लेकिन घर पे नहीं करती है. And then my sons, one of them speaks Hindi. So cute. ऐसे मस्ती मजाक में बोलता है. It's very cute. पढ़ने में कौन होशियार है? वैसा होता है कि कंपटीशन की आज ये आज वो? I have 3 children, so हमेशा सब चीज़ें में competition होता है. But Nisha's been learning Hindi and Marathi for years now, so she speaks, reads, writes, all of it. आपको आती है मराठी? So no, I know Noku Noku, Hello Hello, Moshe, Ikere, Paije. That's it. काफी सीख लिया. जो भी घर पे बोलते हैं मैं वो ही सुनती हूँ. बच्ची के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? With Nisha, it's amazing, my bonding. She's really a superb, intelligent, lovely, sensitive young girl. And, you know, she's extremely creative, which is very nice. And, you know, I think the sky is the limit for Nisha. So if there's something जो आप सिखाना चाहेंगे अपने बच्चों को for the outside world, कुछ ऐसे red flags जो the moment वो अपने घर के बाहर कदम रखें तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी
दुनिया इतनी बुरी है या इतनी अच्छी है, तो ये जो लेसन्स हैं वो क्या होंगे जो आपने अपने लाइफ में सीखे हैं? I think like सबकी life में बुरी चीजें होंगे. I mean, they have to make mistakes to learn from those mistakes. But I think the biggest thing that जो Daniel और मैं हमेशा बोलते, that is, we want them to be good human beings and be kind to people and don't steal, don't cheat, don't hurt people. So being a good human being is at the top of my list. मैं हमेशा बच्चे को बोलती हूँ, especially Nisha because she's a little older. मैं बोलती because she's very smart, like so smart. जो you know like in class हम एक बच्चा होता है जो सबसे स्मार्ट होता है and हम उसको we hate them because हमारे grades तो इतने अच्छे नहीं होते, उसका वो एक बार पढ़ती है वो सब चीजें समझ आती है. She's very very smart. And so I always tell Nisha, I say I don't care about your grades. जो भी आपके marks हैं मुझे कोई like I don't know how to say it. It doesn't matter to me what your grades are. What matters to me is if you're a good human being. Because I can help you with your studies, but I cannot help you be a good human being. You know, I can teach you things about being a good human being, show you how I act, how Daniel acts, what acts of kindness हम कर सकते दूसरे लोगों के लिए. But लेकिन वो अंदर से आना चाहिए, right? So it's like it's a tough process of how do you raise a sensitive, loving, good human being, especially in today's world where they have just so many things at their disposal, and you know, trying to teach them these things is not always very easy. आप पंजाब से आती हैं बेसिकली, तो पंजाब जाती हैं तो कैसा फील करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है, and I'm going to Delhi I think in a week or so. And I love going up north. क्या खाना पसंद है? I mean, Tanya the other day she brought me parante from home that were so yummy, and her mom had made that. What is it? What do you call white butter? दही, मक्खन बनाया था. Then हमने परांठे खाए थे. It was very good. आपने बनाना सीखा? Yeah, I can make paranthas. बच्चे कभी कहते हैं कि मम्मी आज मेरे लिए यही बनना चाहिए. मैं बनाती हूँ, सब चीजें बनाती हूँ. Indian खाना I can make paranthas, fine. But I would have to read a recipe on how to make dal, sabji, ये सब चीज. Same चीजें होते हैं ना? हाँ. सब अच्छा, खाने मसाले अभी भी समझ में नहीं आते. No, I mean like same मसाला होता है सब सब्जी के लिए, right? Okay. It's not any different. It is though. I mean, depends upon the substance. For me, it looks the same. Daniel help करते हैं आपकी cooking में? नहीं वो he's not allowed. सब चीजें जलाता है. It's very bad. और बच्चे को भी समझ आ गई that पापा को किचन में एंटर नहीं होने देना. नहीं, वो स्टोव को नहीं टच करना चाहता. He's not allowed to touch the stove. आपके पास्ट को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं. अगर मैं एक बहुत ऐसा सवाल करना चाहूँ, आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहें कि किसी एक चैप्टर को हटाना चाहूँ, तो कोई एक ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा एक मोमेंट? No, I don't think so. I think that जो भी लाइफ में होता है, you learn something from it. Whether it was good, bad, very ugly. I think you learn from all these different things in life, and it really does shape who you are as a human being. अगर वो chapters हटाते, then who are you? You know, like how did you overcome these different obstacles in life? You know, and it's only later on in life when you get older do you realize this is who I am, this is what my legacy is, this is how hard I've worked, and these are the things that I had to overcome, and see how successful things are. अगर वो hard times नहीं होते, then वो success भी नहीं होता है. So you have no regrets in life? No, I don't. No. Everything was like, everything happened for the reason it needed to happen. You know, as young adults, we make choices in life that are good for us in that moment. We're not thinking 10 साल के बाद लोग क्या सोचेंगे. उसी टाइम पे मुझे ये पता है that I need to either make money or I need to make these choices and I need to do this work and I need to get through my day. How am I going to feed my family or myself? And, you know, later on in life, you evolve, you change. आपका सोच भी change होता है. आपके circumstances भी change होते हैं. Business change होता है. So many different things happen. But you had to start at step 1 to get to the last step. हॉलीवुड से कभी ऑफर आया आपको?
Yeah, I like some stuff. Yeah, but I like it here. बॉलीवुड ज़्यादा I love India. India is my favorite place in the world. पॉलिटिक्स में कोई रुचि है आपकी? Here? पॉलिटिक्स में कोई रुचि? I mean, my government politics, I'm the president. But outside of the house, no thank you. बट फेवरेट पॉलिटिशियन कोई होगा Oh, मैं हूँ मेरे घर में. सनी लियोनी खुद I'm, Sunny Leone, the president of the Weber house. और स्पोर्ट्स में आपकी रुचि क्या क्या है? क्या खेलना पसंद रहा या अभी भी आप कभी मन होता है तो बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं? So हमारे घर में we play soccer, we play basketball, we play American baseball. We play like these types. We haven't gotten into cricket yet. I think वो थोड़ा सा complicated है. At least Noah and Asher के लिए अभी. They're still getting the fundamentals of passing a ball. So जब passing a ball हो जाता है, step one, then then we can move on to other things. आप अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या करती हैं? ये काफ़ी लोग जानना चाहेंगे. Yeah, कोशिश करती हूँ अच्छा खाना खाओ. I think one of the biggest things is food, because what you're eating is definitely what is going to show on your face and your skin and your body. And try and be as active as possible, whether it's walking, even if it's just walking for 20 minutes, you still have to do something, and try and work out as much as possible. एंड मेंटल पीस? Mental peace तो कभी होता नहीं है. मेडिटेशन वगैरह? अगर मुझे 5 मिनट मेडिटेशन के लिए मिलता है, then sure, I'll go do it. But usually after 1 minute, there's mama, mama, mama. So, 3 बच्चों की जिम्मेदारी में? yeah, they're my mental peace. I look at them, I get a hug, I get a kiss, and then everything is worth it. सनी लियोनी अपने आपको अगर व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कौन सा एक शब्द? डेफिनेशन. Okay. कोई एक लाइन, कोई एक शब्द? Oh, okay. In one word. I think it would be just, I want to be known as a hard worker. That, we worked hard and, got success by working hard and being honest. वो आज का कोई यूथ, उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? वो yeah. किस तरीके से मेंटल और फिजिकली? To all the youth out there, आपको काम करना पड़ेगा to make money. अगर काम नहीं करेंगे, then पैसा नहीं आएगा. So you must work. कोई shortcuts नहीं होते हैं लाइफ में. आपको करना पड़ेगा.